अस्सलामुअलैकुम क्लास 7 उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ अलाइड स्कूल का हॉलीडे पैक कंप्यूटर का सॉल्यूशन शेयर करने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही नए सॉल्यूशन आपके साथ शेयर किए जाए तो फॉर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है। द डैश इज द कोर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज अ सीपीयू। द डैश आल्सो नोन एज मेन बोर्ड, मदरबोर्ड। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड वाला, द सिस्टम memory is often is called RAM. RAM stand for random access memory. फिफ्थ आपके पास है द डैश फीड इलेक्ट्रिकल पावर टू एवरी सिग्नल पार्ट हो इन पीसी पावर सप्लाई यूनिट, आप इसको PSU भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सिक्स, द डैश इज द बेस्ट एग्जांपल व्हेन इज इंटरनेट। आ डैश इज द मेन कंप्यूटर इन द नेटवर्क इज सर्वर। आ ब्लूटूथ इज अ डिवाइस फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है वैन स्टैंड फॉर डैश वाइड एरिया नेटवर्क। 10 है आपके पास, द इंटरसेक्शन ऑफ अ रॉ एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। कंप्यूटर इज एबल टू डू nothing until is constructed by software or dash software help in smooth functioning of computer system is a system software। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहला क्वेश्चन आंसर आपके पास है पावर सप्लाई। अ पावर सप्लाई is any device or system that provide electric energy to an electrical load। सेकंड क्वेश्चन है enlist the benefits of using ICT is an education, enhanced engagement, personalized learning, increased accessibility, global exposure, skill development। तो ये जो है इसके आपके पास पांच है बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी एजुकेशन के, इसको आपने नोट डाउन कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टिमुलेशन इन द कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, प्रोवाइड रिस्क फ्री environment, make the invisible visible, cave and efforts। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ प्लेटफॉर्म। PHET is a free web-based platform from the University of Collaborate, help to study, learn science and maths। Write the write down the different applications of GeoGebra।
आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट्स है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ जाता है जी मदरबोर्ड, पावर सप्लाई यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड साउंड कार्ड। Label the component of system unit. Explain why you think reports are important. उम्मीद है कि आपको आज का सॉल्यूशन की अच्छे से समझ आएगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। अब आपके साथ जो नेक्स्ट सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करना है वो इस्लामियत का है, उसको देखना मत भूलिएगा। जाते हुए इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।